गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्टैंडर्ड 7th है, सब्जेक्ट साइंस है, चैप्टर 2 है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ intake of food and its utilization in the body. The components of food such as carbohydrates, lipids, proteins, etc. are complex substances. These complex substances cannot be utilized as such, so it is necessary to convert them into simpler substance. The conversion of complex components of food into simpler substance is called digestion. Various modes of feeding are scraping, chewing, siphoning, capturing, sucking, and swallowing, etc. The human digestive system consists of the alimentary canals and secretory gland. It consists buccal cavity, esophagus, and four small intestine, five large intestine, and a rectum, and six and abhi the inner wall of stomach and small intestine secrete digest juices, namely gastric juice and intestinal juice respectively. Nutrition is a complex process involving ingestion, digestion, absorption and excretion and 5 excretion. अभी नेक्स्ट है आपके fill in the blanks. Number 1, the main steps of nutrition in humans are blank 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 and blank. तो क्या आएगा? फर्स्ट में आएगा इंजेक्शन, 2 में आएगा डाइजेशन, 3 में एब्जॉर्प्शन, 4 में एसिमिलेशन एंड 5 में आएगा एक्सेशन. नंबर 2, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज लीवर. ब्लैंक में आपको लिखना है लीवर. नंबर 3, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ब्लैंक जूसेस विच एक्ट ऑन फूड. तो क्या आएगा ब्लैंक में आपका? डाइजेस्टिव. नंबर 4, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. तो आंसर आएगा villi. नंबर 5, अमीबा digest its food in the food vacuole. अभी नेक्स्ट है true false. नंबर 1, digestion of starch in the stomach. False. Number 2, the tongue helps in the mixing food with saliva. आंसर आएगा true. Number 3, the gallbladder temporarily stores bile. For true. Number 4, the ruminants bring back swallow grass into their mouth and chew. तो आंसर आएगा true. Number 4, टिक द करेक्ट ऑप्शन है. Fat is completely digested in the stomach, mouth, small intestine and D large intestine. का आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. इसका आंसर आएगा सी स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर 2, water from undigested food is absorbed mainly in the. तो इसके ऑप्शन है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, डी लार्ज इंटेस्टाइन. तो आंसर आएगा इसका लार्ज इंटेस्टाइन, जो डी है लार्ज. अभी नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर. व्हाट आर villi? What is their location and function? The inner wall of the small intestine have thousands of finger-like outgrowth called villi. Location: they are found in the inner wall of small intestine. Function: villi increase the surface area for absorption of digestion food. So absorption of digestive food materials easily occurred in small intestine. Next question, where is the villi produced? Which component of the food does it help to digest? आंसर आएगा bile is produced in the liver. Bile helps to digest for component of the food. Next question, number 7, name the types of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. Answer: cellulose, a type of carbohydrate, can be digested by ruminants but cannot be digested by human. Reason:
Ruminates have a large sac-like structure called caryosome between the small intestine and large intestine. The cellulose of the food is digested in caecum by the action of certain bacteria present here. Such bacteria are not present in human. Why do we get instant energy for glucose? Glucose is the simplest form of carbohydrate. It can directly absorb in blood. Through blood circulation, it can reach to body cells. In the cells, glucose breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. So we get instant energy for glucose. Which part of the digestive canal in involved in number one absorption of food, तो इसमें आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर टू चिविंग ऑफ फूड, तो आंसर आएगा बुक्कल कैविटी. एंड नंबर थ्री किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, आंसर आएगा स्टमक. नंबर फोर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, तो आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. नंबर फाइव फॉर्मेशन ऑफ फेजिस, तो आएगा लार्ज इंटेस्टाइन. अभी नेक्स्ट है MCQs. चूज द करेक्ट ऑप्शन. Which of the following is the mode of feeding in python? Achieving, sucking, rumination, swallowing. आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा स्वेलोइंग, जो है ऑप्शन डी स्वेलोइंग. नंबर टू डाइजेशन ऑफ विच कंपोनेंट ऑफ फूड बिगिंस इन बुक्कल कैविटी? स्टार्च, बी फैट्स, विटामिन, डी प्रोटीन. आंसर आएगा ए स्टार्च. नंबर थ्री विच टेस्ट कैन बी डिटेक्टेड बाय द टिप ऑफ द टंग? सार, बी सॉल्टी, सी बिटर, डी स्वीट. तो आंसर आएगा डी स्वीट. Partial digestion of which following occurs in stomach? Starch, B fat, C protein, D cellulose. तो आंसर आएगा 4 C protein. Number 5 which of the following is complex component of food? A glucose, B starch, C water, D amino acids. तो आंसर आएगा आपका B starch. Number 6 Number 6 है in which organs the digestion of carbohydrates, fats, proteins is complete? Large intestine, esophagus, stomach, D small intestine. आंसर आएगा D small intestine. Number 7 which simple substance is formed during the digestion of protein? A glucose, B cellulose, C fatty acid and D amino acid. तो आंसर आएगा आपका amino acid, जो है आंसर डी. Next, number 8 where are the villi located? In stomach, in small intestine, in large intestine, in esophagus. तो आंसर आएगा आपका small intestine. Number 9 in which organ are digestive not produced? In salivary gland, in stomach, in small intestine, in large intestine. तो आंसर आएगा आपका 9 in large intestine. Next 10 number which of the following animal can digest cellulose? A human, B dog, C cow and D cat. तो आपका आंसर आएगा इसका C cow. ये आपका क्या हो गया? चूज़ द करेक्ट ऑप्शन हो गया. अभी नेक्स्ट वीडियो में इसके फिल इन द ब्लैंक्स और आंसर द ओनली वन वर्ड आंसर करवाऊँगी. ठीक है, थैंक यू. ये आपको क्लास वर्क की बुक में और होमवर्क में लिखना है और इसे लर्न भी करना है. थैंक यू.